Hello guys, myself Chaitanya R Kolte and I am again back with the video of ladder friction. When you're concerned with ladder friction, there is a मतलब कभी कभी वेज फ्रिक्शन आता है कभी कभी लैडर फ्रिक्शन बट ये दोनों में से एक श्योर आएगा फॉर 8 मार्क्स. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर ओनली कंसर्न विद द 8 मार्क्स. एक तो वेज फ्रिक्शन आ जाएगा या फिर लैडर फ्रिक्शन. लैडर फ्रिक्शन ये सिंपल पार्ट है बट यू नीड टू हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट. तो ये लॉजिक क्या है वो देखते हैं. Now, when you're concerned with ladder friction, the main part is nothing but a moment because introduction of third condition of equilibrium, that is summation of fx fy and moment equal to zero is over there. And when you're concerned with moment is nothing but force into perpendicular distance. So over here perpendicular distance plays a major role. ठीक है, आपको एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया निकालना तो सॉर्टेड है. बट इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आई हैव गिवन द राइट एंगल ट्रायंगल लॉजिक. सो लॉजिक यूज्ड ओवर हियर, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज थीटा के सामने, दैट इज अपोजिट साइड. थीटा के बराबर बाजू में दैट इज एडजेसेंट साइड. सो यू नीड टू हैव अ लॉजिक हाउ टू फाइंड द opposite and adjacent side for the perpendicular distance of the respective forces. Okay, now when I'm concerned with this part, so when you're concerned with opposite मतलब sin है और adjacent मतलब cos है. So that's why the logic behind the opposite side is hypotenuse sin theta, and the logic behind the adjacent side, how to find the adjacent side, it is hypotenuse cos theta. So this is the logic we will be using in the numerical. And as we have discussed earlier, over here three condition of equilibrium will be used. मतलब तीन अननोन निकाल सकते हैं, that is summation of fx equal to 0, right side जाने वाला positive, left one is negative. Similarly, when you are concerned with the second condition of equilibrium, summation of fy equal to 0, that is upward positive and downward negative. And summation of moment about any point, it may be a flow point, it may be a vertical that is nothing but wall point, फ्लोर या फिर वॉल पॉइंट जो आपको पसंद है वो ले लो. इन दैट क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. एंड इफ एट ऑल आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हो, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, तो आप आपके हिसाब से जाओ. मैंने एक साइन कन्वेंशन डिसाइड किया, मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ, बट आप आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम में जा रहे हो तो भी सेम ही आंसर आएगा. ओके, नाउ दे हैव गिवन सम प्रॉब्लम दिया है, तो पहले वो रीड करते हैं, सप्लाई क्या है वो देखते हैं और डिमांड क्या है वो देखते हैं. ओके, सो एज यू आर सीइंग दिस, द मार्क्स इज 8 मार्क्स. इट्स अ यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम, आपको वो लोगो दिखता रहेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई muquestionpapers.com का. Similarly, when you're concerned with this part, so again it is of 8 marks. और म्यू दिया, म्यू मतलब लैडर फ्रिक्शन ही रह सकता है. ये रॉड की बात हो रही है बट रॉड है, लैडर है, एक ही लॉजिक यूज होता है. ओके, ना सी अभी रॉड चढ़ते वक्त इतना तो आपको पता रहेगा, रॉड ऐसे आप चढ़ रहे हो, ठीक है, तो रॉड ऐसा, ये वॉल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. रॉड कभी भी ऐसे स्लिप होने का चांसेस है, ऐसे, तो वही लॉजिक पकड़ के चलना है. ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे स्लिप होने के चांसेस है. ठीक है, तो वो स्लिप मतलब क्या देता है, आपका इम्पेंडिंग मोशन. इम्पेंडिंग मोशन के बिल्कुल अपोजिट आपका नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, आपका फ्रिक्शन फोर्स, और जिधर टच हो रहा है तो वो सरफेस को परपेंडिकुलर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. तो वही चीज पे हम लोग फोकस करके विल गो फॉर द सेम. ओके, नाउ डिमांड क्या है वो देखते हैं. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट लैडर ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड वेट 25 kg. तो मैंने क्या कर दिया, आई हैव टेकन द सरफेस ओवर हियर, सरफेस ले लिया. दिस इज द वॉल सरफेस, दिस इज द फ्लोर सरफेस. तो ये देखना, सो दिस इज द सरफेस. ओके, प्रॉब्लम डिमांड क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज वॉल एंड दिस इज फ्लोर सरफेस. ओके, इसके ऊपर देयर इज अ लैडर. ओके,
लैडर का नाम क्या है भाई? इट इज ए बी. So I am naming this as A and this as B, and the length of the ladder is 3 meter. So length of the ladder is 3 meter. Okay. So length of the ladder is 3 meter. Or weight is 25 kg. Weight दिया है पर mass kg में रहता है, तो weight will be mg. तो 25 into 9.81, तो weight मिल जाएगा 25 into 9.81, that is 245.25 न्यूटन is the weight. ओके, वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, तो दिस इज द जी पॉइंट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, so this is the weight force over here, 245.25, okay, newton. And this is 1.5 meter, this is 1.5 meter. okay, so क्यों सेंटर पे एक्ट कर रहा है? तो इतना पार्ट हम लोग ने रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, चलो वर्टिकल वॉल दे दिया है हम लोग ने, एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर, चलो हॉरिजॉन्टल फ्लोर भी है हमारे पास. ओके, द लैडर मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द फ्लोर सरफेस. तो ये देखना, ये फ्लोर सरफेस है और ये एंगल 50 डिग्री दिया है, ये एंगल 50 डिग्री दिया है. ओके, किधर यूज होता है देखते हैं. A man, a man of weight 600 kg tries to climb the ladder. How much distance along the ladder he will be able to climb? मतलब क्या, ये कुछ केसेस की बात कर रहे, देखते. केस 1 क्या बोला है? A man of 60 kg is climbing up the surface, and वी हैव टू डिटरमाइन, मतलब ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना ऊपर तक जाए. डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, ट्रेवल्ड बाय द मैन अप द इंक्लाइन लैडर, या फिर अप द लैडर है. मतलब क्या, चलो आई टेक ब्लू में दिखाता हूँ. एक इंसान है, ये ऐसा इंसान है, ठीक है, समझ लो. ये इसका वेट कितना है? इसका वेट ऑफ मैन इज 60 इंटू 9.81 केजी में दिया था, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 इंटू 9.81. ओके, सो दैट इज 588.6 न्यूटन. ये इधर से मतलब कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है वो देखना है, दैट इज एक्स. सो दैट इज द केस नंबर 1. और कुछ बात हो रही है. Climb if the coefficient of friction between the floor and the ladder, मतलब mu over here is 0.2, again the mu over here is 0.2 मीटर नहीं, mu, that is coefficient है, तो इसको यूनिट नहीं रहेगा. And that between the ladder, okay, the floor पे 0.2 है and wall पे 0.3 है. okay, wall पे 0.3 है. okay, also find the angle of ladder. also बोला है, मतलब केस 2 हो गया, केस 2. ओके, केस 2 देखना क्या बोले. also find the length of the angle of the ladder should make with the horizontal. मतलब क्या, अगर इधर 50 डिग्री दिया है तो इधर का एंगल निकालना है, दैट इज थीटा. ओके, तो आई विल राइट टू फाइंड इज थीटा. ओके, सो थीटा such that the man, इधर कंडीशन देखना, that such that the man can climb till the top of the ladder. मतलब find theta when man of 60 kg, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं दिया है, is
at the top of the ladder. Top of the ladder. Okay. So we have to find theta. We have to find theta when man is at the top of the ladder, and mu at floor is 0.2, and mu at a wall it is 0.3. The rest is same. ठीक है, सिर्फ आपको ये चेंज होगा, वो चेंज का पार्ट दे दिया. Now we'll start with the case 1 as in चलो case 1 start करते. Case 1. Okay, case 1. In this case 1 you have to find out x, that is distance traveled by 60 kg man up the ladder. So we have to find this. Okay, so we'll take the initial part as in there is a ladder. चलो ladder बना दिया. Okay, this is the floor surface. Sorry, this is the floor surface. This is the wall surface. Okay, this now in this condition it is having an angle of 50 degree. Okay, this is A point, this is B point. The mu at floor it is 0.3, and coefficient of friction at coefficient of friction at wall is 0.3, and at the floor it is 0.2. Okay, now you have the length. I'll directly move into the forces over here. That is 245.25 Newton is the weight of the ladder, and this distance is nothing but 1.5 because weight है center pack करता है, and over here there is 60 kg man, that is 588.6 Newton for the weight of the man, and we need this x distance. Okay, so FBD निकाल रहे हो तो when you are going for the free body diagram, so the most important part over here is A पे टच हो रहा है, तो सॉरी A पे टच हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन A आएगा, नॉर्मल रिएक्शन B आएगा. ओके, और हमेशा चढ़ते वक्त ये डर रहता है कि ये ऐसे स्लिप हो जाएगा. ऐसे मतलब क्या, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द A point, the impending motion is supposed to be in the left direction, and when we are concerned with the B point, the impending motion will be in the downward direction, and just opposite इसके friction रहेगा तो will give the direction of the friction force. So friction is nothing but mu into normal reaction. So mu over flow surface it is 0.2 Na. Similarly, mu at the wall surface it will be 0.3 Nb. So we have this point, that is we are done with the FBD of this part. Okay, abhi we'll go for the movement first, that is summation of movement about the floor, that is A point. A point is along the flow, A is the flow point, so in that clockwise positive and anti-clockwise will be negative, and when we are concerned with moment आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया तो भी सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, सो डोंट वरी, बट ये आप खुद से करके लगना देखना. आई एम गोइंग विथ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. ओके, now when we are concerned with points which are passing through forces which are passing through the A point, that will be giving zero moments over here. Now see, 0.2 Na, and Na is passing through A point, so that's the reason why this will have zero moment, this will have zero moment. Now when we are concerned with what we say, um, the moments of the weight component of the ladder, weight component of the man,
and the normal reaction as well as the 0.3 nb, that is the friction force. तो ये एक दो तीन चार का मोमेंट निकालना है. ये मोमेंट निकालने के लिए we'll use the perpendicular distance concept, because moment is nothing but force into perpendicular distance. We need that perpendicular distance. So I am taking some points over here. So we have over here, this is the A point. Now see, this is the weight component 245.25 Newton, and this is the perpendicular distance for the same, and ये 50 degree है. And when you're concerned with the hypotenuse will be 1.5, because 1.5 पे एक्ट कर रहा है weight of the ladder, and the ladder length is 3, तो उसका half लिया है मैंने 1.5. we need this distance, and आपको ये distance लगेगा, ये distance. और ये distance कैसे निकालोगे आप? with the help of the concept in the starting of the video. Okay, तो adjacent है इसलिए this will be a hypotenuse. This will be a hypotenuse cos. Adjacent है इसलिए cos 50 degrees. So we have this point, that is hypotenuse is 1.5, cos 50 degree is the perpendicular distance. So we have the perpendicular distance, तो इसका moment निकाल सकते हैं. तो ये देखना, about A it is moving in clockwise direction. The clockwise is positive, so positive is the sign for it, and the force is 245.25 is the force into perpendicular distance 1.5 cos 50 degree. Okay, we are done with the weight component moment. Similarly, on that similar note, हम लोग क्या करते हैं, we'll go for this, that is 588.6, the weight part. This is A point, this is x, and this is the perpendicular distance needed. Okay, so ये फिर से ये angle 50 degree है. तो with the help of that similar concept, ये adjacent है इसीलिए this will be hypotenuse अभी x है, cos 50 degree. Okay, now ये भी clockwise घूम रहा है. Clockwise signifies positive for us according to my sign convention. तो positive sign for the clockwise part. Force is 588.6 into perpendicular distance. This is x cos 50 degree. So plus 588.6 into perpendicular distance is x cos 50 degree. So we are done with the perpendicular distance of the weight of the man. ठीक है, weight of the man का भी हो गया. Similarly, when we are concerned with the friction part, ठीक है, ये देखना. So friction, this is A point, this is B point, this is 3 meter, this is 50 degree, and आपका friction component ऐसे जा रहा है along this surface. Okay, so friction surface along this surface, it is 0.3 and 3, and when you are concerned with the perpendicular distance, this is the perpendicular distance again with the help of the similar concept. तो ये 3 cos 50 degree है. Okay, and when you are concerned with the normal reaction is NB over here. ये ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, तो ये आपका perpendicular distance है, मतलब ये आपका perpendicular distance है. Okay, now with the help of that same concept, अभी ये angle के opposite है इसलिए sin apply होगा. So this will be hypotenuse sin 50 degree. So we have the perpendicular distance of NB, that is 3 sin 50 degree, and we have the perpendicular distance of the friction component, that is 3 cos 50 degree. We'll start with the normal reaction first. ये देखना, about A ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इट इज नेगेटिव, सो इट will be minus for the negative sign convention. NB is the force into perpendicular distance is 3 sin 50 degree. Okay, C sin 50 degree. We are done with the normal reaction, what we say, moment part, and minus y, because 0.3 and 3, that is the friction component, it is also moving in anti-clockwise direction about A, so minus for that part. And when you are concerned with the force, so 0.3 is the force, and the perpendicular distance is 3 cos 50 degree.
तो माइनस साइन दे दिया है. So that will be 0.3 and 3 into perpendicular distance 3 cos 50 degree. Okay, it is equal to 0. तो मैं क्या कर रहा हूँ, I have taken the moment about A part, and when you are concerned with the same, we are NB है ये, NB है ये, NB. Okay, when we are concerned with the number of unknowns over here, the x is unknown as well as NB is unknown. तो ये start नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखते हैं. Now we'll go for the conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium, that is summation of fx equal to 0, right side जाने वाला positive and left one is negative. Okay, similarly summation of fy equal to 0, upward positive and downward negative. Okay, so with the help of this we'll condition of equilibrium on the case 1. तो ये देखना condition of equilibrium लगा दूं तो summation of fx में ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, और कुछ नहीं है, एक और दो है. सो आई कैन राइट ओवर हियर that is 0.2 Na minus Nb equal to 0. So we have the first set of equation. Okay, ये एक इक्वेशन आ गया. Similarly summation of fy में क्या है, सो Na अपवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है. ओके, सो आई कैन राइट ओवर हियर Na. Okay, then minus 245.25 is the weight of the ladder, and minus 588.6, that is nothing but the weight of the man, and the friction force, that is 0.3 Nb equal to 0. Okay, so I can write over here Na plus 0.3 Nb will be equal to, now ये देखना सिंपल है, नेगेटिव है, राइट इक्वल टू के राइट साइड गया तो पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अगेन इक्वल टू के राइट साइड तो पॉजिटिव. सो आई विल इवेंचुअली ऐड 245.25 प्लस 588.6, सो यू विल गेटिंग, आपको ये वैल्यू मिलेगी 833.85. ओके, so we have the second equation as well. So after solving first and second equation simultaneously on the calculator with the help of two unknown equation part, you will get the value of Na and Nb. Okay, so for the first equation, A1 value is 0.2, B1 value is -1, and C1 value is 0. Similarly, A1 value for the second equation is 1, A A2 value for the second equation is 1, then B2 value is 0.3, and C2 value is 833.85. Eventually you will get Na and Nb value. Na is 786.65 Newton, and Nb value is 157.33 Newton. Okay, so ये देखना, मैं न्यूटन मतलब यूनिट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आपको भी देना है. Okay, now we now have the value of Na का वैल्यू है, and sorry Nb, that is 157.33 Newton. Okay, so what you will do is you will substitute the value of Nb over here to find the value of x. X मतलब क्या है, ये जो 60 kg का इंसान है वो कितना ऊपर पर चढ़ रहा है, दैट इज यू विल गेट द एक्स डिस्टेंस. अब द इंक्लाइन कितना है, यू विल गेट दैट पार्ट. तो विल डू द अगेन द कैलकुलेशन पार्ट, दैट इज शिफ्ट सॉल्व से करना है. तो ब्रैकेट में 245, आई एम कंसर्न विद दिस इक्वेशन. ओके, सो 245.45 into 1.5 cos 50 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ब्रैकेट में 588.6 into x, दैट इज x की जगह x ही डालता हूँ, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, cos 50 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ब्रैकेट में NB की जगह substitute the value of NB, that is 157.33 into 3 sin 50 bracket complete minus bracket में 0.3 into NB value again is 157.33 into 3
cos 50 bracket complete alpha and equal to, you will get alpha and calculate, you will get the equal to sign 0, and then shift calculate equal to, you will get the x value ये डिनोट करेगा वो 60 kg का मैन है, वो कितना ऊपर गया है वो देखते हैं. विल इट इज 0.57 meter. Okay, so he has climbed 0.57 meter. Okay, so this is the case 1. Case 2 में without changing any parameters, okay, without changing any parameters, only the theta is unknown over here and the man has climbed. Now see over here, without changing any parameters, okay, this is AB. Okay, तो ये पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा, तो थीटा 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 अननोन है एंड द मैन हैज क्लाइम्ड अप द लैडर. अप द लैडर मतलब मैन जो 588.6 न्यूटन का है, इट इज ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द, ही इज ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर. दिस इज जी, द 245.25 न्यूटन है. दैट इज द वेट ऑफ द लैडर. इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन है. दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शन पार्ट. फ्रिक्शन वही कंसेप्ट पे आएगा. तो दिस इज 0.2 NA. This is NB part, and this will be what we say 0.3 NB, because the coefficient of the friction of the floor surface, it is what we say, it is 0.3. okay, so ये देखना सिंपल है. तो ये क्या करता हूँ, जगह तो लगेगा ही मुझे, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं. नीचे शिफ्ट हो गया, ये भी पार्ट नीचे लेते हैं. न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 1 में ना पूरा कंसेप्ट हो जाता है. इसमें ये दो ही पॉइंट पे आ सकता है, एक तो थीटा निकालने आ सकता है, या फिर दिल आज फॉर व्हाट वी से पी वगैरह. ये सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है. ओके, थीटा, लेट्स फोकस अपॉन थीटा. तो ये देखना सिंपल है. अभी मैं वही कंसेप्ट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, 0.3 NB का. okay, now the ladder length is 3 meter. okay, so that's why अभी थीटा है, unknown is थीटा, तो आपको उससे ही जस्ट रहना. मतलब क्या, दिस विल बी एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो 3 cos थीटा. okay, similarly when you are concerned with the perpendicular distance of NB, so ये थीटा के बिल्कुल अपोजिट है, तो 3 sin थीटा. ओके, तो ये देखना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर 588.6 विल बी 3 cos थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर 0.3 NB विल बी 3 cos थीटा अगेन, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ NB विल बी 3 sin थीटा. सिमिलरली आप वही कंसेप्ट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस of 245.25, that is the weight of the ladder, will be, ये 1.5 मीटर हो गया क्योंकि वेट है, सेंटर पे एक्ट करता है. so this will be 1.5 cos theta. okay, so we have the perpendicular for all of the value, so we'll go for the same as in moment. I'll take moment about a equal to 0, in that clockwise is positive and anti-clockwise is negative. okay, so clockwise positive hai. So see over here, we'll start with the weight component of the ladder, that is it is moving in clockwise direction, and 1.5 cos theta. 1.5 cos theta is the perpendicular distance. So it is 245.25 into perpendicular distance, that is 1.5 cos theta. okay, similarly for the weight of the man, that is 588.6, ये भी clockwise घूम रहा है. so what we'll do, plus 588.6 is the force into perpendicular distance. perpendicular distance कितना है, 3 cos theta. so I'll write 3 cos theta. okay, again when we are concerned with the 0.3 NB, that is the friction at the B point, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है.
Okay, and the perpendicular distance is again 3 cos theta. So minus for anti-clockwise direction 0.3 nb is the force into perpendicular distance 3 cos theta. Okay, when we are concerned with nb is moving, sorry, NB is moving again in anti-clockwise direction. So negative sign for the anti-clockwise direction, and the force is NB, and the perpendicular distance is this, that is 3 sin theta. So it is 3 sin theta. Okay, it is equal to 0. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ही रखते हैं, दैट इज साइन अपॉन साइन, एक साइन है एक कॉस है, तो साइन और कॉस में आप डिवाइड करोगे यू विल गेट दैट रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो हम लोग क्या जो नेगेटिव है नेगेटिव मतलब एक कॉस कंपोनेंट को एक साथ करते हैं, साइन कंपोनेंट को एक साथ करते हैं, ठीक है। और एन ए तो यूज नहीं हो रहा है, और एन बी का वैल्यू मिला था वो यूज करेंगे, दैट इज 157.33 न्यूटन। ओके, नाउ सी दिस इज द एनबी वैल्यू, ये यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कॉस को एक ही जगह रखते हैं। तो कॉस थीटा मैंने ये 3 इक्वेशन से कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा ले लिया, सो ओवर हियर 245.25 into 1.5 plus 588.6 into 3 minus 0.3 into NB। नाउ ये देखना इधर 0.3 NB की जगह मैंने लिया है 157.33 into 3, मतलब ये 3 का पार्ट है। ओके, तो ये cos थीटा कॉमन लिया, और राइट साइड आपका गया NB, ये देखना ये राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड गया, तो NB का वैल्यू क्या है 157.33 into 3 sin थीटा। ओके, तो ब्रैकेट्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो cos थीटा इनटू कितना है, आई विल डू द ब्रैकेट पार्ट, दैट इज ब्रैकेट इज 245.25 into 1.5 plus 588.6 into 3 ठीक है, माइनस 0.3 इंटू, थोड़ा ये करते हैं तो पहले से 245.25 into 1.5 plus 588.6 into 3 minus 0.3 into 157.33 into 3 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ा है, देखते हैं 1992.2078 and this is nothing but 157.33 into 3, तो ये 471.99। ठीक है, तो आपको पता है कैलकुलेटर पे tan इनवर्स आता है, tan इनवर्स है तो tan में कन्वर्ट कर दो, तो साइन अपॉन कॉस इज tan, तो आप क्या करोगे 192.2078 अपॉन 471.99 इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, एंड आफ्टर डिवीजन दैट इज 1992.2078 डिवाइड बाय 471.99, so you'll get 4.22 as the value, so theta will be tan inverse of 4.22. okay, so tan inverse of answer is 76.67 degree is the value of theta when the man has reached the topmost point of the ladder. Okay, so this is also simple numerical. What I will do is you have to find the range, अभी range बोला मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पकड़े रखता है और मैक्सिमम वैल्यू ये पुश करता है। ठीक है, वही सेम है, दे हैव बिकॉज दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर, क्या बोला है, रेंज बोला है, रेंज। ओके, सो पहले तो P मिनिमम क्या करेगा, P मिनिमम से पकड़े रहेगा, बट ये एक्चुअल में स्लाइड कैसे होगा, ये डाउनवर्ड और ये लेफ्टवर्ड, ये P मिनिमम आपको इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट ये स्लाइड कैसे होगा, ऐसे। ओके, वो सिर्फ ऐसे इक्विलिब्रियम में रख रहा है, P मैक्सिमम क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, P मिनिमम इक्विलिब्रियम में रख रहा है, बट एक्चुअली वो लैडर कैसे आ रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ रहा है,
बट वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में रख रहा है। पी मैक्स क्या कर रहा है, थोड़ा पुश कर रहा है, मतलब ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, सेम लैडर के कंसेप्ट पे ही है। तो मैं आपको दो कंडीशन दे देता हूं, पी मिनिमम और पी मैक्सिमम, और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आ गया अगर आपको पी मिनिमम और पी मैक्सिमम का कंसेप्ट समझ रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल ड्रॉ इज द वॉल पार्ट एंड द फ्लोर पार्ट। मैं दोनों साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करता हूं। ओके, द वॉल पार्ट एंड द लैडर पार्ट, सॉरी द फ्लोर पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द लैडर ओवर हियर। एक ही ड्रॉ करते हैं, उसको ही कॉपी करता हूं। ओके, so this is the A point, this is the B point. Okay, फिर ये एंगल नहीं दिया, एंगल तो निकाल सकते हैं यार। राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपोजिट tan इनवर्स ऑफ, ये कैसे निकलेगा, tan थीटा इट इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज 40 सेंटीमीटर अपॉन एडजेसेंट दैट इज 16। तो tan इनवर्स ऑफ 40 डिवाइड बाय 16, you will get the value of theta that is 68.19। तो दोनों केस में वही है, तो 68.19 डिग्री है, वो जीरो नहीं है। ओके, नाउ दिस इज द P minimum for us and the perpendicular distance is given, so no need to worry about the moment part, that is 20। okay, now ये भी आप निकालना चाहते हो तो ये निकालोगे कैसे, ये निकालोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, सो क्या अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस, सॉरी 40 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर, यू विल गेट दिस, दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड या फिर लैडर 43.08। तो आप कैलकुलेट कर दो, सो दिस इज 43.08, दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, सेंटीमीटर में है, दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज कितना 40 सेंटीमीटर। तो सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉर्टेड है, तो ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है। ओके, ऑन द सिमिलर नोट, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, सिर्फ आपका फ्रिक्शन चेंज होगा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। तो मैं क्या करता हूं, आई कॉपी दिस फॉर द मैक्सिमम एज, कॉपी करता हूं। okay, सिर्फ only change I am doing it over here is maximum। okay, now maximum और minimum, maximum क्या कर रहा है, minimum क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है, समझ लो इक्विलिब्रियम। बट ये रॉड या फिर लैडर क्या आ रहा है, वो तो इधर ही आने की कोशिश कर रहा है, बट जो पी मिनिमम है उसको इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द सेम, तो इसका इंपेंडिंग मोशन ओवर हियर ऑन द लेफ्टवर्ड, बी का डाउनवर्ड इंपेंडिंग मोशन हो गया। ओके, नाउ पी मैक्स में क्या अलग हो रहा है, पी मैक्स में क्या अलग हो रहा है, तो पी मैक्स क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, रॉड को पुश कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है, तो ए पॉइंट राइट साइड जा रहा है और बी पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, सो दैट्स व्हाई ये इंपेंडिंग मोशन ओवर हियर, impending motion over here। ओके, सो आपका इधर फ्रिक्शन कंपोनेंट आ जाता है, फ्रिक्शन देखना 0.215 फॉर बोथ द सर्फेसेस, सो ओवर हियर ये 0.15 Na, सिमिलरली 0.15 Nb, तो फ्रिक्शन सॉर्ट हो गया। सिमिलरली ओवर हियर क्या है, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा, दैट इज 0.15 Na ओवर हियर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा, दैट इज 0.15 Na। ओके, तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, यू हैव टू अप्लाई समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव। सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू 0, upward positive and downward negative. Similarly, summation of movement
about a point equal to zero in that clockwise positive एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और याद रखना आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज लिखना। सिमिलरली आपको ये कॉपी करना है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। सिमिलरली सेम अप्लाई दिस थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर हियर। तो तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज इधर पी मिनिमम है, एन ए और एन बी, तो थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री अननोन्स मिल जाएंगे। सिमिलरली थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री अननोन्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द फ्रिक्शन फ्रिक्शन पार्ट, दैट इज लैडर फ्रिक्शन। मतलब मैं अगर कैलकुलेशन वाइज जाऊँ तो वेज फ्रिक्शन और लैडर फ्रिक्शन में से एक न्यूमेरिकल आता है और ये न्यूमेरिकल 8 मार्क्स के लिए आता है। ओके, सो उतना ही करना है। ओके, सिमिलरली अभी इसके बाद मेरा ब्लॉक फ्रिक्शन और टिपिंग फ्रिक्शन का वीडियो आ जाएगा। ब्लॉक फ्रिक्शन और टिपिंग फ्रिक्शन में एक न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स, बट इट इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ब्लॉक फ्रिक्शन डबल ब्लॉक आता है और डबल ब्लॉक ये 8 मार्क्स के लिए आता है, बट सेम कंसेप्ट यूज होगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। अभी क्या है मेरी तरफ से एक ये हो रहा है, मुझे यूट्यूब का एक पार्ट नहीं पता था, आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको लाइव स्ट्रीम का रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है बिफोर 24 आवर्स। तो अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजा, तो 6 आवर्स 6 o'clock को जो अपना लाइव सेशन है वो नहीं हो पाएगा, बट मैं क्या कहूंगा 6 o'clock को जो मैं बोलने वाला था वो लाइव नहीं, एक वीडियो हाउ टू स्कोर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सम्स, वो जो भी स्ट्रैटेजी है आई मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट एट 6 PM sharp। तो वो वीडियो देख लेना। ओके, बिफोर गोइंग टू एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द लाइक और कमेंट करो, जैसे डाउट्स है तो कमेंट करो, आई एड्रेस दैट डाउट्स। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।